students, once again. So in this part 2, organic chemistry, some basic principles and techniques, we will study organic compounds. What are these? Their importance, and organic chemistry as a separate branch of chemistry. We will also learn that why carbon forms large number of organic compounds. So let's see, we have already seen that organic compounds, they are simply the hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives, they are known as organic compounds. And the branch of chemistry which deals with the study of these organic compounds, that's known as organic chemistry. So in organic chemistry, we study organic compounds, their preparation, property, structure, their uses, and the mechanism of the reactions which these organic compounds involve. So hydrocarbons and their derivatives, these are our organic compounds. This is the modern definition of organic compounds. Now, what are hydrocarbons? You already know that name indicates that all those compounds which contain hydrogen and carbon in them, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है. जैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, जैसे सिंपल हाइड्रोकार्बन दैट्स आवर मीथेन CH4, जैसे हमारे पास है ईथेन, ये अल्केन्स है. सिमिलरली अल्कीन्स, अल्काइन्स, हमारे पास है बेंजीन C6H6. All these are hydrocarbons because they contain carbon and hydrogen in them. Now, their derivatives, that means those compounds which we will derive from these hydrocarbons. Just like this, we are having methane CH4 hydrocarbon. अगर इसमें हम एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करेंगे और इसको रिप्लेस करेंगे by some other atom or group of atoms, like okay, let me add OH group to this. So what it will become? It will become CH3OH. अभी तक ये मीथेन था, हाइड्रोकार्बन था, पर अब जो है इसमें एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस किया by this OH group, ये बना अल्कोहल, and this is our methanol. So methanol जो है ये हमारा डेरिवेटिव है of this methane hydrocarbon. So हम इसमें याद रखेंगे कि those compounds which we will derive from these hydrocarbons by replacing one or more hydrogen atoms with other atoms, we get the derivatives. Just like this, we are having the same methane. If we will replace one hydrogen atom and we will replace it by halogen atom, okay, let's say chlorine, so what it will become? CH3Cl. So it will become methyl chloride or chloromethane. तो ये जो chloromethane है, this is also an example of derivative of this hydrocarbon methane. तो ये सभी derivatives जो है, जो हम derive करेंगे compounds hydrocarbon से, these are also the organic compounds. So simply you will remember that these organic compounds, they are the hydrocarbons and their derivatives. Now, ये जो organic compounds है, what is their importance? What is their significance? Why we study these organic compounds? पर उससे पहले यहाँ पे हम याद रखेंगे कि organic compounds जो होते हैं इनमें क्या क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स इनमें यूजुअली पाए जाते हैं. हमने तो कहा ये हाइड्रोकार्बन्स है और इनके डेरिवेटिव्स. एक्चुअली मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स जो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, एक तो यूजुअली कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इनके अलावा फ्यू अदर एलिमेंट्स होते हैं. लाइक क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, सल्फर. ठीक, ये एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा फ्यू अदर एलिमेंट्स, बस कुछ ही एलिमेंट्स इनमें होते हैं. जैसे ऑक्सीजन है,
जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, फॉस्फोरस है, बस ये कुछ फ्यू एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर. नाउ लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल what is the importance or significance of these organic compounds, why we study these organic compounds, what is their importance. First of all, you will remember that organic compounds are very large in number. We are having nearly 9 million organic compounds. So among the nearly more than 10 million organic compounds, 9 million organic compounds are the organic compounds. So let's see what is their importance. So importance of organic compounds, or we can say significance of organic compounds, or we can say the application of organic compounds. So you can't imagine, there is very vast application of these organic compounds. We use these organic compounds in our everyday to-day life from top to toe. We are made up of organic compounds. Just we are having our body, it is made up of cells. Cells contain nucleus. Within the nucleus there are nucleic acids, DNA and RNA. DNA is made up of pentose sugar, similarly phosphate, phosphoric acid in the form of phosphate, and nitrogenous bases. So what are those? Pentose sugar, that's an organic compound. All the sugars which we take, like glucose, like we are having sucrose, any pentose sugar like ribose sugar, these are nothing but the organic compounds, right? So when you are watching this video, your eyes are using an organic compound, that's the retinal, to convert the light into the nerve signals. And when you are watching this video, you are using your mobile phone, or you are using your laptop, and you are keeping this laptop into your hand. When you pick this phone into your hands, you are using energy. Your muscles convert sugar into energy by various chemical reactions, by oxidation reaction. So you are using the organic compound here, right? Similarly, when you are understanding this lecture, your brain uses simple organic compound, that is trans amino acid. Amino acids actually fill the gap, or they bridge the brain cells. Between the brain cells there is a gap that is filled by the amino acids, the organic compounds. Then you understand the different topics or any task, right? So without your consciousness, your body is using organic compounds. Hundreds of reactions are taking place in your body in which organic compounds are involved. तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे कि जो भी हम फूड्स लेते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. What are carbohydrates? These are the organic compounds. We are using similarly proteins. What are proteins? These are the organic compounds. These are the polymers of amino acids. Similarly, we are using fats. So we use food in the form of carbohydrate, in the form of proteins, in the form of fat. These are nothing but the organic compounds. Just we are having the different sugars we are taking. We are having sugar like glucose, that is C6H12O6. We are having sucrose, that is C12H22O11.
We are having different sugars which may be monosaccharides, disaccharides. We will study them in detail in the upcoming videos. Just we are having maltose sugar, we are having fructose sugar, right? Different sugars are there. So we are having starch, right? These are the organic compounds. Similarly, we wear cloths. Cloths are nothing but the polymers. These are the organic compounds. Similarly, we are using dyes. We use different color dyes to dye a particular cloth in order to make it attractive. Dyes are nothing but the organic compounds. Similarly, we take enormous number of medicines and drugs, right? Medicines, these are the organic compounds. Similarly, we are using oils, we are using different types of creams, cosmetic products. These are the organic compounds which we are using in our daily life. Similarly, organic, just we are using the artificial sweetening agents. These are nothing but the organic compounds. We are using different types of polymers. These are the organic compounds. So polymers are the organic compounds. They contain different large number of monomers in them. Just we are having polythene, which contains ethene as a monomer in it. We are using dextran polymer. We are using PVC, polyvinyl chloride. These polymers are nothing but the organic compounds. We will study them. There is a complete unit, polymer chemistry. वहाँ पे हम इनको डिटेल में देखेंगे. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये हम हर जगह पे यूज करते हैं. जस्ट वी आर हैविंग द परफ्यूम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जस्ट होल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं. जैसे हम देखते हैं जितने भी फ्यूल्स का हम यूज करते हैं, फ्यूल, वी आर हैविंग पेट्रोल, वी आर हैविंग डीजल. These contain the hydrocarbons, just octane, butane, pentane, hydrocarbons. So hydrocarbons are the organic compounds. So these fuels, with the help of which we can run a large number of vehicles, right? So these fuels, they are also the organic compounds. So organic compounds are everywhere. We use them in our daily life. They have, we can say, large application or importance. When we go through the whole chemistry, when we will study some basic concepts about organic chemistry, general organic chemistry GOC, इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे organic compounds के applications हैं, कहाँ पे इनका हम use कर सकते हैं. जैसे explosives, we are using various explosives. जैसे ट्राइनाइट्रोटोलीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो हर जगह पे इनके एप्लीकेशन आप पाएंगे. नाउ लेट्स सी this organic chemistry as a separate branch of chemistry. Why we study organic chemistry as a separate branch of chemistry? So there are various things which will differentiate actually organic compounds from inorganic compounds. So that's why, and we are having a very large number of organic compounds, so there is a definitely a need to study these organic compounds, this organic chemistry as a separate branch of chemistry. So let's see organic chemistry as a separate branch of chemistry. Number first thing in which we will see that organic compounds differ from inorganic compounds, that is the composition.
So we have already seen that organic compounds are made up of few elements, just like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, and halogens. Halogens are represented generally by symbol X. It can be fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. So अगर हम inorganic compounds की बात करेंगे, they contain other elements other than these elements. Just we are having rock salt, NaCl, sodium chloride. Just we are having the potassium nitrate. It contains potassium, nitrogen, oxygen. So inorganic compounds जो है, they contain large number of elements. They contain, we can say that inorganic compounds जो है, उनमें बहुत सारे एलिमेंट्स से उनको बनाया जा सकता है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्यू ही एलिमेंट्स यहाँ पे है. कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ ही एलिमेंट्स है, चुने हुए, गिने हुए. यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं बहुत ही कम एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, पर इनका नंबर जो है, हाँ नेक्स्ट हम देखेंगे फिर इनका नंबर. एक तो कंपोजिशन में ये डिफर हो रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कंपोजिशन, क्योंकि इनमें कुछ फ्यू एलिमेंट्स है, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बाकी बहुत सारे हैं ना. वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स. इनको छोड़ के बाकी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स होता है. अगर हम नंबर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, वेरी लार्ज इन नंबर. जैसे अभी मैंने बताया देयर आर नियरली 9 million organic compounds or more than that, because every day, every week, every month new organic compounds are being synthesized, right, in the lab and also extracted from natural sources like plants and animals. तो यहाँ पे इनका बहुत ही, अगर देखो इनमें कंपोजिशन तो कुछ एलिमेंट्स है, पर इनका नंबर जो है बहुत ही ज्यादा है. अब इसका रीजन जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे. What is the reason why organic compounds are so large in number? Now let's see third. अगर हम बात करेंगे लिंकेज की, in organic compounds atoms are linked by covalent bonds. So organic compounds में जो bonds होते हैं they are covalent, which are formed by mutual sharing of electrons. और अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे वहां पे एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो लिंकेज में भी डिफरेंस है. तो अगर हम सोर्स की बात करेंगे, ओरिजिन है कहाँ से इनको ऑब्टेन हम करते हैं, इनका ओरिजिन, तो यहाँ पे भी ये डिफर होते हैं. देखो मोस्टली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको हम, उनका जो सोर्स है दैट इज द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है नेचुरल सोर्स है ना, नेचुरल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड इन लैब, जैसे यूरिया द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो नेचुरल सोर्स इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. और अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है दैट इज द मिनरल्स एंड रॉक्स. सो दे डिफर इन द ओरिजिन. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, तो यहाँ पे भी ये डिफर हो रहे हैं. कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर नॉन पोलर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर. So when they are non-polar, they are insoluble in water. So non-polar है तो किस में soluble होंगे? So they are soluble in non-polar solvents, like we are having benzene, we are having carbon tetrachloride, we are having ether. इनमें ये soluble होंगे. पर अगर हम inorganic compounds की बात करेंगे, they are polar, they are soluble in water, but insoluble in these organic solvents. Similarly, if we talk of conductivity, अगर हम conductivity की बात करेंगे
तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेंगे? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अभी हमने देखा इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आयॉन्स फ्री नहीं है, मोबाइल आयॉन्स है ही नहीं, तो डेफिनेटली दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Electricity is because of either mobile electrons or either because of mobile ions. पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होते हैं और यहाँ पे तो आयंस है ही नहीं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स. पर अगर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, they are good conductors in both molten state as well as in the aqueous state because of mobile ions. Next अगर हम बात करेंगे जिसमें organic compounds जो है they differ from inorganic compounds, that will be, देखो organic compounds में हमने देखा कि इनमें बॉन्ड कोवेलेंट होता है. तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दैट विल बी लो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई सो? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है दे आर अट्रैक्टेड बाय वीक फोर्सेस, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बट अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दे कंटेन आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, तो डेफिनेटली पोलर है, उनमें मॉलिक्यूल्स जो है देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे विल हैव डेफिनेटली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे complexity, definitely organic compounds, you will remember that organic compounds have complex structure and have high molecular mass. इनका molecular mass जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है. देखो जैसे हम देखते हैं, और इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे सक्रोज की है, सक्रोज इट इज व्हाट C12H22O11, राइट. सो दिस इज आवर सक्रोज. इसमें कार्बन 12 एटम है, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, इसका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा होगा. डेफिनेटली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको ऐसे नेक्स्ट से समझ में आ जाएगा. जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है इट्स अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स एंड ग्रीन प्लांट्स सिंपली. सो व्हाट इट कंटेन्स? इट कंटेन्स कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, and then Mg, magnesium. So it has definitely complex structure and it's having very high molecular mass. जैसे आगे हम देखेंगे पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका बहुत ही ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर मास होता है. So we'll remember that organic compounds have complex structure and have very high molecular mass. अगर हम inorganic compounds की बात करेंगे तो उनकी सिंपल स्ट्रक्चर है और लो मॉलिक्यूलर मास है. जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है, दैट्स सिंपल फॉर्मूला. जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कैल्शियम सल्फेट, तो उनमें कम्प्लेक्सिटी भी कम है, सिंपलिसिटी है उनमें, और उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी कम होता है. मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो लेस. So that's why we are studying organic compounds, organic chemistry as a separate branch of chemistry.